नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने कथक नृत्य से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कथक एक्सपोनेंट मिस सायनी छावड़ा जी की। सायनी छावड़ा जी की बात करें तो इन्होंने हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया है। और ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही रिच है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ और आपसे बात करके और भी ठीक हो गई हूँ। ओ थैंक यू सो मच मैम। और आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सो आर यू। यस, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? बहुत बार, बहुत बार। एक तो जी क्लासिकल डांस, और आज के जमाने में आ, बहुत कंपटीशन भी है और बहुत क्या बोलेंगे, सब कुछ बहुत कम भी हो जा रहा है क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है। और भी चीजों बढ़ते जा रहे हैं, शोज नए नए तरह के आ रहे हैं। तो बहुत बार हुआ है, लगा है कि अब नहीं होगा, पर फिर भी चलते गए और करते गए, अपना रियाज करते गए। और फिर वक्त आया कि भगवान ने देख लिए कि नहीं, ये कर रही है कोशिश, तो थोड़ा हम भी करें। तो उनके मर्जी से, उनकी इच्छा से सब जी कुछ आगे बढ़ता जी। गया। जैसे जैसे जितना भी किए हैं, बहुत ज्यादा नहीं किए, पर जितना भी किए हैं, भगवान की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ता गया। जी जी। और जो मैम सच्ची लगन से जो किसी भी काम को शुरू करता है, उनकी कभी हार नहीं होती। जिस तरह से मैंने आपकी जर्नी देखी है, मैं आपसे बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि जो हमारा ये इंडियन कल्चर है, ये क्लासिकल डांस की बात करें, कथक डांस की बात करें तो बहुत ही रिच है। और काफी महान पर्सनालिटी हुए हैं हमारे देश में जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करे। और सच में मैं आपसे भी बहुत ही इंस्पायर हुई हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रही हो इंडियन थैंक कल्चर यू को सो प्रमोट मच। करने के थैंक यू लिए। सो मच। और और आप लोग जैसे हम जी, लोग को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैम, क्योंकि मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। और मैम, आप कोलकाता से हो और कोलकाता की बात करें तो वहाँ पे मतलब ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि सिंगर कोलकाता से कलकत्ता से आते हैं और एक्टर, कथक एक्सपोनेंट, काफ़ी सारी पर्सनालिटियाँ जो कलकत्ता से है।
तो कलकत्ता की ओर आपको ले जाना चाहूँगी, आपका जो बचपन है वो कैसा है? बचपन की कुछ यादें मैम और किस तरह से आपका हाँ, क्लासिकल डांस और कथक की ओर जी, रुझान हुआ? उसके जी, बारे में मैं जानना चाहूँगी जी, मैम। जी। मेरा नाम आप अगर देखेंगे शायोनी चावड़ा, तो ये एक्चुअली शायद पूरी वर्ल्ड में एक ही नाम आपको मिलेगा, ये जो नाम है, only name that has helped me a lot because I am a Bengali. I am a complete Bengali, Bandopadhyay. Okay, Banerjee, what we say. So, and then I was married to a Gujarati, and this weird name combination happened. But I am a Bengali, I told you, and हाँ शायद बंगाल की हवा, पानी, सब कुछ में शायद आर्ट कल्चर ये लिखा हुआ है सर। हम लोग के इधर जो रसगुल्ला मिलते हैं, हम लोग रसगुल्ला खा के बड़े होते हैं, तो यस, उसमें शायद वो रस हम लोगों में आ जाती है, कुछ कुछ रस हम लोगों में आ जाती है। तो हाँ, बंगाल में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे, डेप्थ है। जो टैलेंट का जो डेप्थ, एक तो टैलेंट होती है उसका, उसके बाद टैलेंट का डेप्थ होता है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ आर्ट, ऑफ अ लैंग्वेज, ऑफ लिटरेचर। वो एक बात होती है। इंडिया में तो सब जगह में टैलेंट है, पर जो डेप्थ है ये शायद बंगालियों में, हम लोग के बंगला में बहुत ज्यादा है। बहुत घर घर में सब कोई गाना गाते हैं, डांस सीखते हैं, करते हैं। अभी थोड़ा कम हो गया है, पर हम लोग जब छोटे थे सब कोई क्लासिकल गाना, नाच, डांस ये सब सीखते थे। और हम मेरा भी बचपन वैसे ही गुजरा। मेरी मम्मी को, माय मदर लव्ड डांसिंग, एंड शी गेव लाइक शी wanted me to be a dancer, and middle class family से हूँ। My father also supported like anything, because dance is an classical dance class, anything, if you want to pursue something, any study, field of study is costly, right? And डांस में कॉस्ट्यूम्स, घुंघरू, फिर जो गुरु को देना पड़ता है, गुरु दक्षिणा जो, इट वाज एन कॉस्टली अफेयर। तो my father supported me very much. My mother, when I was 2.5 years old, she just 2.5 years old, I couldn't speak maybe properly, but she took me to this Kathak ओह dance class. वाओ! Yes, yes. And from there, but that was not a proper training, but it was a class, Kathak dance class only. And then after, like from school time, class 4, 5, my proper training started. I learnt under good teachers, Srimati Luna Pan. Then my Guruji, Pandit Vijay Shankar ji, I got my scholarship, national scholarship under him. Then I performed for Sangeet Natak Academy under him, and then all this journey. Then I learned from a very good Pakhavaji in Bengal, Pakhavaj player, Mridang player. I got my tal training. There's a lot of aspect of dance. You know, some part is like the abhinaya part. Then there's this tal part. There is this presentation, overall presentation part. So there are a lot of aspects. I learned my tal part from Sri Naresh Mukherjee. He's a good, very good Pakhavaj player. So all these things happened. My family supported me a lot. Thankfully, my family have always supported me. I have even, by grace of God, my children support me. I have two children, very small ओह! children. One is 8, my daughter is 8, and my son is 4. And they ओह! also know that their mother is dancing. They should be responsible at this time. My son does not understand that much, but my daughter is extremely caring and extremely supportive, and she loves the whole fact that I'm dancing. She also dances. She also tries to dance and be like me, and that's overall the support I have got is tremendous. And then there's this, always the support from above that I have always felt from God. So
that's one of the biggest support I felt. Whenever there was some, some problem, he opened another way. Maybe he didn't open Yes. that way, that path only, but he opened another way. He gave me beautiful students. I am so proud of my students. They are my backbone. He gave me friends, he gave me very good friends, very good, um, a lot of things he gave me. And I'm very thankful to him. My Firstly, my mother, my father, then my husband, then my in-laws, then my family, my students, and then the friends I have got. I'm very thankful to them, and this is how my journey is going on actually. ओह ग्रेट मैम। और जैसे मैम आपने फैमिली की बात की है, फैमिली की सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो। तो सच में आपकी जो फैमिली है बहुत ही सपोर्टिव है। और सच में मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपकी जो जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। जिस तरह से आपने बात की कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, उसके बाद आपने अपना जो करियर की शुरुआत की है वो कंटिन्यू रखी। आपने लखनऊ घराना से भी मैम सीखा है, पंडित विजय मैं शंकर जी से। एक्चुअली तो मैं लखनऊ एक्चुअली घराने प्योर से कैसे लखनऊ जुड़ी? घराना की हूँ। मैं एक्चुअली जी, प्योर लखनऊ घराने की हुई हूँ, क्योंकि जिनके जी, पास भी सीखी हो। देखिए, कथक में 3 घराना मेनली होती है, ठीक है? जो मेन ट्रेडिशनल घराना, एक जयपुर, बनारस एंड लखनऊ। लखनऊ घराना, अ, अ, जैसे महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, उनके जो पूर्वज थे वो लोग किए थे। और उनके स्टूडेंट्स जो अभी है, उन वो लोग कर रहे हैं। तो my Guruji was trained under Pandit Vijay Birju Maharaj ji, my Guruji Pandit Vijay Shankar ji, and I have learned from him only. So this is actually the process of learning. That's the यस, घराना, यस, मतलब एक घर जो एक ट्री राइट, है जैसे, उसके अंडर में ही जी। हम लोग हैं। तो दैट इज द ओह! घराना बेसिकली। So I'm purely from bred in Lucknow घराना। ओह! ग्रेट। लेकिन आप लखनऊ घराना के साथ कैसे जुड़ी मैम? Uh, Lucknow, that is the thing. My Guruji belonged to Lucknow घराना. Uh, it's a मतलब घराना जैसे होता है, वो एक जो सिस्टम हम लोग का डांस का, जो अलग अलग कथक कथक डांस का 3 सिस्टम है, 3 बेसिकली नाउअडेज एवरीथिंग इज ब्लेंडेड, बट एक डांस का स्टाइल, नॉट सिस्टम, स्टाइल, 3 स्टाइल अलग थे है। तो वो लखनऊ घराना इज वन ऑफ द स्टाइल्स ऑफ कथक। तो सिंस माय गुरुजी इज फ्रॉम लखनऊ घराना, I have learned ओके, under him. The compositions, the bowls that I have learned, they belong to Lucknow. But there's a style, there's a pattern of ओके। यस, compositions यस, of आई नो। the gharanas that I have learned from them. That's the way I've got into Lucknow gharana. I do not ओके, belong to any family of Lucknow gharana people. I do not belong to any यस। family of gurus. I just learned under them. ओके, ओके। यस, लखनऊ घराने की मैम आपने बात की है, क्योंकि ममता महाराज जी वो लखनऊ घराने जी, से हैं। जी, वो भी जी. मेरे शो से जुड़ी हुई है और मेरे शो में आई थी, और ये मेरा सौभाग्य है उनसे She's मिलना। a very good dancer. She's a यस, यस, excellent. I love her. I adore her. यस। बहुत ही ग्रेट शख्सियत है, ग्रेट पर्सनैलिटी है। और मैम हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। सिंह जी जुड़े हैं, जो कि बॉलीवुड के जाना म्यूजिशियन है, सैक्सोफोनिस्ट है। थैंक यू सो मच। ब्रिजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भी है। थैंक यू सो मच ब्रिजेश सिन्हा जी। थैंक यू। विद्युत बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैम डांस की अगर बात करें तो आजकल काफी कंपटीशन है। और आपकी अगर जर्नी की बात करें, आपने काफ़ी शोज़ किए हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं
आपका जो फर्स्ट शो था एज अ प्रोफेशनली, उस के जो मोमेंट है, क्योंकि वो जो हमारा पहला शो होता है वो हमारे दिल के करीब होता है, तो मैं जानना चाहूंगी आपका जो फर्स्ट शो था उससे जुड़ी कुछ यादें। फर्स्ट सोलो शो, सोलो डांस यस, शो। यस, हाँ, यस, पहले तो जो भी गुरुजी के आपका शो अंडर था जो फर्स्ट। कर, जी, हाँ, फर्स्ट तो गुरुजी के अंडर करती थी मैं, जैसे मतलब उनके ग्रुप में करती थी उनके अंडर। देन व्हेन आई जी, गॉट नेशनल स्कॉलरशिप, then suddenly in जी, class, when I was in Guruji's class, suddenly a जी, call की, एंड सबके साथ हम लोग सब कोई डांस कर रहे थे, तो गुरुजी stopped everyone and told me that told in over the phone that I'm recommending then I was Shayoni Banerjee for the show. Then he straight away told me that contact this person, Sangeet Natak Academy. And Sangeet Natak Academy still is a very big thing for me. And यस, उसके पहले थोड़ा थोड़ा बहुत shows किए थे, but this जी, was the big break, like first break. And they were taking मतलब जो एक गुरु के अच्छे जो जी, recommended शिष्य थे, उन लोगों मतलब उनको लेके डांस करवा रहे थे, तो जी, that was like very special for me, still is very special for me. I was 20, I was maybe 21, 22 years old that time when such a big platform came. Before that, I used to do shows. Sorry. For some shows, I also ओके, received money also. Professionally भी जी, किए थे, but that was a big break, solo and with live performance. It was held in Bhubaneswar, and जी, सब memories clear है अभी तक उसको related, because it was the first, big thing for me. And excited भी बहुत थी. संगीत नाटक academy, like even at this age also, if any artist gets a Sangeet Natak Academy platform, he or she will be very excited. And at that time, it was like, the best thing that happened to me. And Guruji ki recommendation se hua tha, to it was more, more of an, more happiness for me, So that was the first, you can say, proper, professional, very good platform show for me. And then आगे आगे तो होता गया. Then I formed my group. I had my group, and we started doing. We have done so many shows, so many government national level shows, and we have enjoyed each and every, all the journeys, all the, you know, each and every show. If I if somebody points out that show, I have memories related to that. I can say things what happened. Each show was special. Each show still date is special. um every stage, even if it's small, or maybe not that, not that showy. Maybe this all stages are different also, all the uh, auditoriums are different. Everything is different, but still each show I remember with a lot of love, with a lot of, you know, even jo gratefulness, each and every journey. But ओह, that was the first thing that happened. ओह ग्रेट मैम। और मैम आप एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो और आपने काफी शोज किए हैं, जैसे कि आपने अभी बताया है, काफी फेस्टिवल किए हैं, और इसके अलावा आपकी जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी किस तरह से आप सिखाते हो मैम, और वो क्या है मैम? Can you repeat the last line? Something got cut off. किस यस, तरह यस, से मैं सिखाती हूँ? जी, जी। अ, मैम आपने काफ़ी शोज़ किए हैं और नहीं, आपके स्टूडेंट भी बहुत अच्छा शोज़ कर रहे हैं। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है मैम, वो मैं जानना चाहूँगी। जी, जी।
सिखाते तो बहुत जन को है, सिखाए बहुत जन को है. To tell the truth, if you teach 200 people, 300 people, or maybe 500 people, luckily one or two actually dance. So मैं actually I started teaching when I was with Guruji only. His class I used to teach sometimes when he didn't come. So that was when I was quite young. So that from that time I've started this teaching process, and then my own school happened. So, but to tell the truth, you know, actually my teaching experience is not very good. Like, if I've taught many people, 2 or 3 have actually danced, but thankfully, that is also a lot compared to other dancers where there's nobody. Still, that's a lot because these 2 or 3 or 4 or 5 people that I have, they are very loyal, they are extremely hardworking, they are very much dedicated to their teacher, to me actually. And that's a very big blessing for me. How I teach them, I don't know. I actually, when I teach, I find it uh, more I find it more positive when I'm actually appreciating them rather than telling them this is not happening, you're not being able to do. No, I tell them this is good. Now you try something better. This is what my Yes. approach is. Positive, 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 and being very friendly with them. I'm actually a very um, open person, very friendly person. As you can also understand, I try to be very, something, ma'am. No, not something like that. It's okay. She's a human being, kind of a person. So that they become, free with me. I try that. That's something helps maybe. That's something maybe attracts them to me. These 3, 4 people who are actually taken up dance professionally, they are actually very hardworking. They have they have ambition. They want to do something, and that has helped them. And I am always there. But the main thing is that they have ambition. They have this fire inside them that we have to do something. We have to stay with dance. We have to love dance. That's what helps them, and that's what's taking them forward. Uh, I think I'm Ritz. Hello. Hello. Yes, your connection got lost. Am I not being audible to you? Hello. Yes, Yes. ma'am. Yes. Now it's. I'm extremely sorry, but I'm not being able to hear you. Hello. Yes. Hello. Yes. यस यस एक्चुअल में आई थिंक नेटवर्क इशू है तो हो सकता है मे बी मेरी आवाज नहीं आ रही हो यस जी. और मैम अगर आप किसी भी चीज को सीखते हो तो एक लगन होनी चाहिए एक जुनून होनी चाहिए आई थिंक उन बच्चों में वो जुनून है वो लगन है तभी वो इतना अच्छा काम कर रही है और मैम मैंने देखा है कि आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो अलग अलग थीम को लेकर आप आते हो तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कथक के बारे में थोड़ी-सी कथक की जो बारीकियाँ होती है किस तरह से क्योंकि कथक सीखना बहुत ही मुश्किल होता है वैसे अगर देखा जाए। कोई तो भी आप किस क्लासिकल तरह से डांस फॉर्म इज यस, डिफिकल्ट. यस। यस. तो किस तरह से जी. आप थीम को लेके आते हो? किस तरह से परफ़ॉर्म करते हो मैम? हम आपसे जी. जानना चाहेंगे। जी. नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, all
all our classical dance forms, all our classical music forms require a vigorous learning process. Learning process is the main thing. And then there's this riyaj process, this practicing and perfecting process. So all the dance forms, be it Odissi, be it Bharatanatyam, be it Kuchipudi, anything, be it Manipuri, all the classical dance forms are beautiful. They have a vast vastness in them. And Kathak is also, the Kathak is actually my love. So how I go on with the shows. Firstly, there's two aspects of nowadays shows. आजकल जो होती है, पहले के जमाने में जो होती थी वो बिल्कुल अलग, एकदम अलग था. अभी जो होता है, we have two types of shows. One is a live performance with live musicians, and another one is recorded performance with recorded music. पहले के जमाने में recording करवाना बहुत मुश्किल था. It was a very expensive process. Nowadays, everybody has home studios. They are making music at home. So this is the two different aspects of nowadays a show. We, as trained dancers, classical dancers, we always enjoy live performance where musicians sit. We have this, हम लोगों में जो एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशन होता है म्यूजिशियन और डांसर्स में, एक जो एक हम लोग एक लय में जाते हैं, वो लोग भी होता है, आते हैं, वो जो एक रिलेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एंजॉयबल है हम लोगों के लिए. एंड बट सैडली nowadays this live music shows have stopped, very few, because this musician cost, कोई कहीं भी म्यूजिशियंस को लेके जाना, वो सब कॉस्ट जो होता है, वो the organizers don't want to bear. They want to do only with a lot of group. बड़ा ग्रुप होना चाहिए, थीम बेस्ड होना चाहिए. These things happen nowadays. So we dancers have resorted to recorded music, though we do not really always enjoy that thing, but that is something not we won't be able to complain about all the time, because this change happens with time, right? So since we have recorded music, there is a lot of chance of scope of having different kind of themes. मैं कभी कभी, जैसे हम लोग का अभी जो चल रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव, मेरा उसके ऊपर एक थीम है, एक पूरा शो बेस्ड है, where we are showing India through the eyes of a child. Okay, the child asks the mother, how is India, where is, how vast is it, and the mother answers, and we dance in the answers. This is one of my show. Then we have प्योर कथक, प्योर कृष्णा मतलब लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है, शिव जी के ऊपर है. मेरा एक ध्रुपद के ऊपर पूरा आइटम है, रिकॉर्डेड आइटम. वी परफॉर्म दैट. देवी के ऊपर है, दुर्गा जी के ऊपर. तो वी परफॉर्म wherever whatever is required, however the organizer asks, we give that kind of thing there. I also have a Bollywood based recording where all the old songs, मतलब 4-5 old songs को लेके I've Kathakized the गाना. मतलब जस्ट ऐसे ही नहीं, उसमें बोल डाल के एकदम पूरा कथक अंग के अंग से करके वो हम लोग करते हैं. So there are these different kind of items I have, and however the organizer asks, we put forward such kind of shows. ओह, और मैम आपने केरला में भी आई थिंक शो किया था जी, ओनम फेस्टिवल केरला. में. हाँ, यस जी 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 जी. जी. वो कन्नूर का जो कन्नूर का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उनके अंडर शो हुआ था. जी. और मैम हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, क्योंकि जो ये आरडीडी शो की फैमिली है मुझे बहुत ही सपोर्ट करती है, तो मैं इनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगी इन सभी को. सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बॉलीवुड के म्यूजिशियन हैं. थैंक यू सो मच सर. और हमारे साथ तोशी नास्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं. थैंक यू सो मच.
सौंदर्या गर्ग जी जुड़ी है हमारे साथ यूएसए से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनकी मैं नेम भी नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि जो ये हमारी फैमिली है ये बहुत हमें सपोर्ट करती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैम आपने 2009 में एक अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी हाँ। वो प्रोडक्शन हाउस के अंडर में हम लोग कुछ कुछ काम किए थे। जैसे तब बहुत टेररिज्म हो रहा था पूरा वर्ल्ड में, तो आई प्रोड्यूस्ड अ शो Phoenix Rising from the Ashes, where the world is was being shown as a phoenix bird, and it was rising from the ashes of of terrorism. So that was supported by many uh, big multinational companies also, Hindustan Unilever, and um, there are there were many other companies which supported it, and we had put forward such shows. And then from there, all my other work started. Um, all my these productions, one after another, Ravindranath Tagore ko leke production, and all those things, they started, and now we are moving forward with that, all those shows. That journey was from that time, 2009. जी ओ, और मैम ये सफर आपके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ भी हो और साथ जी। में आप कथक एक्सपोनेंट भी हो, तो मैं जानना चाहूंगी कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। Exponent कितना हूँ पता नहीं. Exponent is somebody who is a, like, big thing. I'm just a dancer. I'm just a performer, just a teacher, not even a guru. I don't like to tell myself as a guru, because I'm not a guru. I'm not a perfect human being also. But मुश्किल तो बहुत था. And अभी भी है. अभी actually मुश्किल बहुत ज्यादा है, because all shows have started coming in, and I'm a mother also. I'm a mother of two beautiful children, and I have to take, they are my priorities. As dance is one of my side, but my family and my children are my priority. My father is still there with me. My mother-in-law is with me. I am a very proud family person first. Then I have to, I, I want to keep my family very well, and then dance. Both are very important to me. So difficulties happen, and I'm somehow, with God's grace, I told you before also, I've got beautiful students, great students. They manage half of my difficulties. They take away half of my difficulties. My husband is extremely supportive. I have never seen anybody actually more supportive than him. My father is mm, he's 70, 71, but still if I tell him once, please come, he will come at the, darkest of nights. He will be there. So by God's grace, I have a very big support system, and God has always helped me. God has always helped me. My Guru has always helped me. So I'm extremely grateful. Um, मुश्किल तो आती है. मुश्किल तो सबको आती यस, है. आप जो करते हैं, आप जैसे काम करते हैं, राइट। every day you speak to so many people, you face so much difficulties yourself, but still you are going on, you're moving forward. So same with us. We are all trying to move forward, work, and then stay happy. So let's see. यस, We are यस, all और actually जो in the कोशिश same. करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती जी, मैम। जी, your show is यस on that only. जी। Yes. और मैम कथक की बात करें तो आपकी जो मेन इंस्पिरेशन है वो कौन रही है? क्योंकि हमारा ऐसा कोई इंस्पिरेशन होता है जो हमें इंस्पायर करता है, तो आपका भी ऐसा कोई इंस्पिरेशन रही होगी जिन्होंने आपको जी, हमेशा uh, इंस्पायर किया होगा? जी, जी. My teachers have always been my inspiration, because when I was learning under Luna Pan Didi, she was the one of the. She's still the one of the uh, most graceful dancers I have seen. One of the most beautiful dancers. Then my Guruji and I.
I don't know, I've never seen anybody who had a more perfect movement, who had a more perfect approach towards dance than my Guruji. I've never seen anybody. Then, of course, Maharaj ji, मतलब मिर्जू महाराज जी, दुर्गा लाल जी, मतलब ये जो पंडित सब है, महाराज जी, जी, दुर्गा लाल जी, uh, you see them and you think that uh, this is perfection. This is actually यस, perfection. You get inspired by them so much. Nowadays, as you were telling Mamta Didi, they are जी, perfection. You see them, you want to, you know, imbibe from them. You want to get retained from them, and they are all my inspirations. I ओह, am also there are many other dancers from other fields who have inspired me. Everything you can imbibe good things from every sector. I have been hugely inspired by other dancers, other dance forms, other mm, dance artists. I watch regularly their shows, their what they're working on, and I get hugely inspired, hugely, uh, you know, get awestruck by them, and I try to retain from them their approach towards dance, their perfection. Some people are very perfect in what they राइट, do. I try to see them and try to get that in my dance. Uh, there are actually a lot of inspirations I cannot point out, but the main inspiration has always been my teacher, my guru. ओह, ग्रेट मैम। और मैम डांस के अलावा और क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी और क्या-क्या करते हो आप? मैम, अभी तो हॉबीज तो बहुत सारे थे। अभी तो कुछ भी टाइम नहीं मिलता है, टू टेल द ट्रुथ, एंड इट्स अ वेरी बैड थिंग नाउअडेज दैट्स हैपनिंग। मे बी वी ऑल टेल वी आर बिजी, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी एक्चुअली बिकम वेरी बिजी। पहले तो बहुत गाना सुनने, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मोहम्मद रफी साहब। I am ओह! actually, I was actually, when I was young, I used to think that he is actually the best thing in the world. And Lata Mangeshkar ji, I love listening to them, and I can spend hours listening to them. Classical jo gana, I love listening to classical singers, all the classical singers, then tabla, pakhawaj, Drupad जो है, Drupad is style of Indian classical singing. It inspires me hugely. There are many Drupad artists. I can listen to them for hours, and these are my hobbies, but not much right now. I do not get that time, but uh, these are the hobbies I have. Cooking is also very one of my favorite things, but somehow nowadays I'm not really being able to cook a lot. Other than that, I don't think I'm good at anything much. Maybe I've focused only on dance for a long, long time, so I am not really good at drawing and anything. Sometimes nowadays, writing things in Bengali or in English, ओह! thought writing nowadays. Um, I want to do that sometimes, and I attempt that. I never thought it will become a something I would love, but I am seeing that with age, maybe I like to pen down. I like to pen down things nowadays. So that these are some hobbies, but since dance takes up consumes so much of my time, because not only dance, because of dance I have to do yoga, I have to take care of my health. I have to, go for a walk or run most of the days. Um, you know, it consumes a lot of my time. So maybe hobbies, nowadays I do not get much time, but writing, cooking, and listening to songs, these are my ओह! hobbies. ग्रेट मैम एंड थैंक यू सो मच। और जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो कथक सीखना चाहते हैं उन्हें? ऑडियंस को तो बोलूंगी जस्ट एक ही चीज, दैट बी हैप्पी in whatever circumstances you are.
try to be happy, because at one point of time, this is the only thing matters, right? Being happy. Whatever you are doing, trying to be happy. और जो कथक सीखना चाहते हैं, जो कथक डांसर्स हैं, उन लोगों को बोलूंगी कि आगे बढ़ो, बहुत कुछ कर सकते हैं. And if a lot of people will come up, the whole market will be created, and we can do a lot of work together. We can move forward. Not only Kathak, classical dance जो पूरा सब है, pure classical dance, we can, if we raise like a mob, then we can do a lot of work together. So let's create something, as Bollywood has created their sphere, as there are many spheres that has been created. Now let's create a very big sphere where we can represent worldwide. हम लोग सब मिलके कुछ करेंगे, so it will be a beautiful thing. So I'll just say this, I want to say this thing. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया. बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू. थैंक यू सो मच. It was थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. mutual, madam. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू सो मच एवरीवन. और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं हो